Mahi, welcome back to my channel. So आज की वीडियो से क्लियर है कि हम बिल्कुल फेस्टिव सीजन के बीच में है एंड आई थॉट कि मैंने कोई मेकअप वीडियो नहीं की है रिगार्डिंग दैट. So I have created this look in today's video and I'm so happy क्योंकि no foundation look है. So your makeup is gonna be like super light and पता है सारी प्रोडक्ट्स बहुत अफोर्डेबल है एंड Amazon पे ऑफ कोर्स बहुत मस्त सेल चल रहा है एंड यू गोना गेट एवरीथिंग ऑन लाइक हाईली डिस्काउंटेड प्राइसेस. तो जो भी प्रोडक्ट्स मैं यूज करने वाली हूँ इस वीडियो में यू विल फाइंड all the links in the description and yes, without further ado, let's go to the video. Starting with this Fit Me primer by Maybelline. I love this primer and मेरी ना थोड़ी dry skin है, so I use like a generous amount when it comes to primer. After dotting it all over my face, मैंने ना इसको brush से blend किया है. I personally think brush से चीज़ें blend अच्छे से होती है, मतलब that is my experience. It can differ from skin to skin obviously, but मेरे skin पे brushes work way better. And ये एक foundation brush है, मेरे पास पहले से पड़ा था. And second step that I'm doing is using these glow drops by Swiss Beauty क्योंकि हमारा festive look है, so थोड़ी extra shine हम इसमें look में indulge करेंगे, so काफ़ी अच्छा लगेगा. Then I am going in with the concealer. This one is again by Maybelline. This is their Instant Age Rewind concealer. As you can see, I use a lot of concealer. That is why I would say that this is a no foundation look. And I mean, after applying this much of concealer, who would need foundation, right? But no, I know people use this much concealer plus foundation also, but मेरे को ये इतना enough लगता है. And now the real game, I am blending it with one of my favorite brushes ever. मतलब जब से मैंने मेकअप स्टार्ट किया है ना अपनी लाइफ में करना, ये ब्रश मेरे साथ रहा है. Of course this is not the same brush guys, I keep changing it. This one is a KABUKI brush by Color Bar and it just blends everything really beautifully. Yeah, so this is how my skin looks after I have blended the concealer. Next, I'm setting this using a setting powder. This one is by Color Bar. I love this. Baking my under eyes. उसके बाद I'm just using the leftover powder to set all my makeup in place. मैं compact नहीं use करती हूँ. I've been using loose powder only instead of using a compact. It just works for me. उसके बाद I am using eyebrow gel to just darken my eyebrows and comb my eyebrows. This is the only expensive product by the way in this video. अभी मार्केट में बहुत सारे eyebrow gel आते हैं, तो आप किसी के लिए भी opt कर सकते हो. I'll find some and link them down below. Now I'm just removing the excess powder from my face. This is how it looks now because it's a festive look and we sweat a lot क्योंकि हम इधर उधर भाग रहे होते हैं and all of that. I would highly recommend you to use your setting spray twice. Here I'm using the Maybelline Fit Me one. एक तुम जब तुम्हारा base हो जाए ना तब लगा लो and then of course एक afterwards when you're done with all your makeup. This is the star product guys. I love this palette. It has everything: eyeshadow, blush, bronzer, highlighter. And yeah, I just love it. I'm gonna use these two shades, like the subtle pink and brown one, to create a beautiful look. And मैं ना वही ब्रशेस यूज़ कर रही हूँ जो पैलेट में आया है. मैं कोई बाहर के ब्रश सेट से नहीं यूज़ कर रही हूँ. ये काफ़ी अच्छे से ब्लेंड कर देता है आई शेडो. दीज आई शेडो एंड ये जो इसमें ब्लश और ब्रॉन्जर आता है ना, बहुत ही अच्छे से पिगमेंटेड है. सो आई लव दिस. आई मीन मैंने एक ही बार इस ब्रश पे कलर लिया था. यू कैन सी हाउ ब्यूटिफुली इट हैज़ कवर्ड माई आई. की टू गुड मेकअप, I always say this, मतलब I'm not a makeup artist or a professional or anything like that, but I always say this कि blend जितना अच्छे से कर सकते हो. Now I'm using that bronzer वाला जो shade था to underline my lower lash line. This is like the most important step I think when it comes to my eye makeup. It just defines your eye so well. Then I'm going in with this subtle pink glitter.
एंड या मुझे ऐसा लगता है जब ग्लिटर की बारी आती है ना, या कोई भी मेटालिक शेड होता है, उसको तुम अगर अपनी फिंगर से लगाते हो तो जो उसका लुक और कलर आता है ना, वो बिल्कुल ओरिजिनल आता है जो पैलेट पे होता है. Now I'm just using the highlighter given in the palette to, highlight the inner corners of my eye. Now to complete my eye look, I'm using this mascara which I am obsessing over lately. Just let me tell you that this is not waterproof, it's water resistant, yes, and that is why I love it because it's so easy to remove. But जो इसका look आता है ना आई पे, वो exactly waterproof mascara वाला आता है. I mean, I just love this mascara. Plus, it's so affordable. You have to get this mascara at least. This is how our eye look is looking. Let's do the other one. Okay, I am done with the eye makeup. Now let's add some color to our face. आई एम यूजिंग द सेम पैलेट. आई एम गोइंग इन विद द ब्रॉन्ज़र. तो मैंने ब्रॉन्ज़र ले लिया है ब्रश पे, एंड पहले मैं ना जहाँ भी मुझे लगाना है मैं लगा रही हूँ, क्योंकि एज आई टोल्ड यू कि ये बहुत पिगमेंटेड है. सो आई एम जस्ट गोना पुट द प्रोडक्ट जहाँ जहाँ मुझे चाहिए एंड देन ब्लेंड इट आफ्टरवर्ड्स. मेरे को ये फिर से मैं बोल रही हूँ, बट आई रियली लाइक दिस पैलेट. बाय द वे, इज़ इट जस्ट मी कि तुम्हारा भी लेफ्ट और राइट प्रोफाइल इतना डिफरेंट है कि तुम्हें ऐसे लगता है कि लिटरली these are two different people? I love my left profile. I don't hate my right profile, but it's like, yeah, it's there. Of course, I will not hate it. Now let's just give some depth to our non-existing jawline. But yeah, all I want to say is just have fun while you do your makeup, and धीरे धीरे तुम, वही है इसका ट्रिक, ये है कि ब्लेंड बहुत अच्छे से करना होता है, एंड you'll be like almost decent as I am. Next, for the blush, I'm using like one of my favorite blush palettes, and इसमें से ये दो shades मेरे favorite है. So I'm just going in with the fluffy brush almost all over my face. Of course, my cheekbones, nose, chin. Yeah, so I just love using blush. I think almost everyone does. It just gives such a cute look. And now I'm using the highlighter from the same, like the earlier palette that we were using. Again with the fluffy brush, क्योंकि सिर्फ cheek bones पे ना लगा के I am going in like on my nose also, थोड़ा सा मेरे upper lip के पास, and because it's like a festive look, we got to shine, my friend. Next, for the lipstick, my first step is lip balm or a lip primer. This one by Dermaco is like my current favorite. ये जो लिप कॉम्बो मैं यूज़ कर रही हूँ ना, इसका सारा नाम एंड लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने ऐड कर दिए हैं. बाय द वे, दिस लाइनर इज़ फ्रॉम इनसाइड कॉस्मेटिक्स. आई लव दिस कलर. दिस लिपस्टिक इज़ बाय MyGlamm. एग्जैक्ट शेड आई एम टेलिंग यू अगेन, नीचे डिस्क्रिप्शन में है तो देख लेना. एंड नाउ गोइंग इन विद आवर लास्ट lipstick coat, which is by Maybelline. I love Maybelline का ये जो liquid lipsticks आते हैं ना, उसके super stay matte वाला, I love their formula a lot. Now I'm just going in with a tissue paper and थोड़ा सा loose powder लिया है मैंने brush पे, and इसको ना मैं dab कर रही हूँ अपने lips पे. इससे ना lipstick, एक तो जो liquid lipsticks होते हैं वो इतने स्टिकी नहीं रहते, और बहुत अच्छा सा एक मैट सा मस्त लुक आ जाता है, प्लस इट स्टेज लॉन्गर. सो या, दिस वाज आवर फाइनल लुक. लेट मी गिव यू सम पोजेस. I really hope that you guys enjoyed watching this video and found this helpful. मैंने ना आज बाल curl करे, and I don't have like that much of length, so it's like too fluffy, but I'm also loving it. सारे makeup links तो है ही description में. I'm also gonna find like the similar jewelry that I'm wearing. Some of this is from Amazon, so yeah, I'm gonna attach everything down below. Also, I was thinking to attach a link to my favorite makeup bag.
ये भी मैंने अमेजोन से ही लिया था एक्चुअली, सो आई थिंक यू शुड ऑल्सो हैव इट। बहुत मस्त ऑर्गेनाइजर है एंड इट्स सो ट्रैवल फ्रेंडली। आई रियली होप दैट यू गाइज आर एंजॉइंग योर फेस्टिविटीज। मेक श्योर बिफोर यू गो लाइक दिस वीडियो, कॉमेंट डाउन बिलो हाउ डिड यू लाइक दिस लुक। आई मीन you can rate this look out of 10, you know. And I will see you guys super soon in my next video.